Dear students, in this lecture, we shall learn about a certain type of functions which is known as homothetic functions. Let us see. Firstly, we should learn about the etymology of this word because it's a new word. Basically, it's taken from the ancient Greek language and it means homo, which means which means same, and it's also the word thesis that means setting or placement or arrangement. So you can guess that it's about a thing जो कि एक ही setting में exist करती है. So let us see how it means in geometry. It's basically attributed to a man called Shepherd. He gave this idea in 1953. Now, diagrammatically speaking, homothetic functions generate radial expansions. So firstly, we should understand what are radial expansions. If we consider the center and there will be a circle around it and there will be a radius, and you see that if we divide it into some curves, those radiuses, the curves produced, they will expand, they will, go to the next level. So this is what radial expansion is, that the curves in the same way are getting shifted outwards. We shall see this in the diagram as well. Another thing is to note that their angles and their ratios of the distances, they will remain the same. All of it is very much clear with the help of this diagram. You can see that there was one curve, this red curve, which was having a certain value, and then it was shifted outwards. Another curve was made on the basis of it. So what you can observe is that the ratio of the distances is the same. If you consider these two, you'll see 6/4 is a certain value, or 4/2 is a certain value. So you see there is a sort of pattern. It is not just happening haphazardly, it is happening with a certain pattern. And the angles, if we consider them, they are also the same. So therefore, we can say that this is a possibility of having homothetic functions. Now we are considering a function which is q as a function of a and b. It's actually a production function. And if there is a monotonic transformation of this production function, there will be a new production function by using this. In monotonic transformation, what we see is that the preferences are kept the same. And we will have a new production function जिसमें आप देख सकते हैं ये वाला production function embedded है और इसकी basis पे ये नया production function बन रहा है. So it is likely कि उसके अंदर वो properties retain रहेंगी, जारी रहेंगी. ये composite production function है या composite function है because ये एक function के ऊपर दूसरा function base कर रहा है. Homogeneity में disappear. हम देख सकते हैं कि इसकी अगर homogeneity एक certain degree की है, that is q is having a certain degree of homogeneity, जो हमारे पास नया फंक्शन होगा जिसे हम होमोथेटिक फंक्शन कह रहे हैं, उसमें होमोजेनिटी हो सकता है एंड हो जाए, खत्म हो जाए. सो एक न्यूमेरिकल एग्जांपल इज दिस इज q और इसकी मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन है a + b + 3. हमने 3 ऐड किया. सो अगर हम इसकी डिग्री ऑफ होमोजेनिटी देखें तो इसकी होमोजेनिटी डिग्री 1 है और ये होमोजीनियस नहीं है. You can do this rehearsal by using the knowledge from the previous lectures. So what we see is that in homothetic development, the homogeneity can be lost. वो ख़त्म हो सकती है. So इसकी एक और ये बात कि ये डिपेंड करता है अपने ओरिजिनल फंक्शन पे. जो मोनोटोन फंक्शन है, जो नया फंक्शन है, वो अपने ओरिजिनल फंक्शन पे डिपेंड करता है. ये हमने देखा बिकॉज वो उसकी जगह इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जगह पर अपीयर हो रहा था. दूसरे अल्फाज में h का और q का एक रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, दैट इज देयर डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू 0. एक्सपेंशन पाथ अगर हम प्लॉट करेंगे तो दोनों की एक्सपेंशन पाथ लीनियर ही होगी अगर पहले की लीनियर है, बिकॉज उसने उसकी प्रॉपर्टीज को कंजर्व करना है और इनको आगे लेके चलना है. सो अगर डायग्राम की आप बात करें तो उनकी MRTS सेम होगी बिकॉज दे विल बी हैविंग सेम स्लोप, जैसे आपने डायग्राम में ऑब्जर्व किया. दैट इज होमोथेटिक फंक्शन की ओरिजिनल फंक्शन की स्लोप बराबर होंगी. ये इसका प्रूफ है. अगर हम इसकी डिफरेंशिएशन करें तो हमारे पास ये आंसर आएगा. हमें पता है कि h इज अ फंक्शन ऑफ a एंड b. अगर प्रिसाइसली बात करें तो h q का फंक्शन है और q आगे a का और b का फंक्शन है. हमने चूंकि a के लिहाज से यहाँ पे डिफरेंशिएशन करनी है इसलिए b को कांस्टेंट किया, b के लिहाज से डिफरेंशिएशन करनी है इसलिए a को कांस्टेंट किया. तो इसका जो जवाब है वो ये आएगा. हमने चेन रूल को अप्लाई किया. ये आप खुद देखें कि कैसे चेन रूल को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं. आपको पहले भी सिखाया हुआ ये. और उसके बाद कैंसिलेशन होगी एंड वी विल बी कमिंग अप विद दिस वैल्यू.
जिसे हम शॉर्ट टर्म में ऐसे लिख सकते हैं. सो इसकी शॉर्ट हैंड टर्म जो है वो ये है, और आप देख सकते हैं इट इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ द ओरिजिनल फंक्शन. सो होमोथेटिक फंक्शन की और ओरिजिनल फंक्शन की स्लोप एक जैसी होगी. सो ये है वो चीज़ जो हम सीखेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम ये देखेंगे कि होमोथेटिसिटी कैसे चेक की जा सकती है एक ऑफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन की. सो ये थी वो कंडीशन जो कि होमोथेटिसिटी को चेक कर सकती है. थैंक यू.